Hello, everybody. Are you also preparing for JRF Junior Research Fellow of DBT, ICMR, Serb, CSIR? So कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं लाया हूँ आज आपके लिए एंड कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा जो कि अलग अलग डोमेन्स है जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। देन आपके पास अलग अलग टॉपिक्स लाइक इकोलॉजी जिसमें एनवायरमेंटल साइंस वगैरह आ जाते हैं, biotechnology, microbiology, biochemistry, every possible question, genetics जो आ चुके हैं एंड आ सकते हैं। सबसे पहले है मॉल बायो। सो मॉल बायो में आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन डिपेंडिंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के पास होती है। डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन का दूसरा नाम होता है हेलिकेस। प्राइमेज जो कि आरएनए प्राइमर्स को अटैच करता है। ओरिक साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन में टाटा बॉक्स, प्रिबनाउ बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स या कैट बॉक्स। तो -25 बेस पेयर अवेयर कौन सा है, 75 बेस पेयर अवेयर कौन सा है, -10 बेस पेयर अवेयर कौन सा है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, एडिनाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, राइट, देन केपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, initiation factor sigma and termination factor rho, कोजैक सीक्वेंसेस एंड शाइन डलगानो सीक्वेंसेस जो कि इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसलेशन प्रोसेस। एंड शाइन डलगानो कोजैक पे काफी बारी क्वेश्चन आता है। कुछ जैसे एवरग्रीन टॉपिक है जैसे हार्डी वेइनबर्ग्स इक्विलिब्रियम हो गए। तो कुछ कुछ टॉपिक्स से ऐसे क्वेश्चन है, रॉबर्टसोनियन क्रोमोसोम हो गए, जिससे क्वेश्चन काफी बार आते हैं, वॉबल हाइपोथेसिस। देन कुछ टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस एंड डीएनए रिपेयर जैसे कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, base excision repair, mismatch repair, non-homologous end joinings, xeroderma pigmentosa, breast cancer resistant, right? अलग अलग टाइप्स के म्यूटेशंस होते हैं, पॉइंट फ्रेम शिफ्ट जैसे इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ साइलेंट म्यूटेशन xeroderma pigmentosa। तो मिस सेंस, नॉन सेंस, एंटी सेंस, बहुत टाइप के अलग अलग म्यूटेशंस होते हैं। देन क्लोनिंग वेक्टर्स जैसे कि प्लास्मिड्स, कॉस्मिड्स, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, selectable markers and yeast artificial chromosomes, कितने किलो बेस पेयर्स, कितनी कैपेसिटी किसकी है। लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बीच का डिफरेंस है। ट्रिप्टोफैन इज एन एनाबॉलिक एंड रिप्रेसिबल, इट हैज अ co-repressor, while lac lactose operon is a inducible and it is non-repressible, okay, and it is a catabolic. Then PCR and sequencing techniques like quantitative real-time PCR, CT, critical threshold value. What do you mean by cyber green? क्यों use करते हैं cyber green? Forward reverse primer if it is an RT-PCR. Sanger sequencing, Dancel chloride sequencing, Edman's reagent method of sequencing and next generation sequencing जिसमें pyro sequencing आता है. Gene editing and silencing, siRNA, small interfering RNA, miRNA, microRNA, CRISPR-Cas9, clustered regulated interspace palindromic sequence repeats, right? So ये एक जीन एडिटिंग की टेक्निक्स है। तो इन तरीकों से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सेल बायो से आपको सीडी के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज G1S, G2M, राइट, P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, आपके G1S, G2M में कौन से साइक्लिन ए बी सी डी कहाँ है, राइट, 2, 3, 4, 6, 8, इनिशिएटर कैस्पेस, एग्जीक्यूशनर कैस्पेस कौन से हैं। देन अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस के बारे में इंपॉर्टेंट मार्कर्स, प्रो एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक, बिड बैड बैक्स आर प्रो एपोप्टोटिक, BCL2, BCL XL आर एंटी एपोप्टोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, lysosomes, peroxisomes, microtubules, intermediate filaments, microfilaments, अलग अलग गोल्गी बॉडीज, SER, RER, अलग अलग टाइप के आपके ऑर्गेनल्स के बारे में, उनके फंक्शंस, उनके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो वो फिजन फ्यूजन है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रोड्यूसेस साइटोक्रोम सी जो कि एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व है। तो छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड सेल मैट्रिक्स जंक्शन जैसे कि डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, गैप, अधेरेंस, टाइट, राइट, ये सारे सेल जंक्शन है। सेल सिग्नलिंग, receptor tyrosine kinase, JAK-STAT, MAP kinase, IP3DAG, anositol triphosphate, diacylglycerol, GPCR, अलग अलग साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स जैसे कि जो ड्रग्स उनके काम करते हैं जैसे साइटोकैलाजीन हो गया, कॉल्चिसिन हो गया, टैक्सिन हो गया, विनक्रिस्टिन हो गया, अल्बेंडाजोल हो गया, विच आर माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग, और काइनेसिन डाइनिन पे कौन से काम करते हैं। देन वी हैव बायोकेमिस्ट्री जहाँ पे आपका फॉस्फोरुक्टोकाइनेज, अलग अलग जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स है उनके बारे में पढ़ना है आपको, irrespective it is carbohydrate, lipid, protein metabolism.
ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन हो, या फिर आपका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो, या फिर आपका कीटोजेनेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, अलग-अलग विटामिन्स एंड कोफैक्टर्स एंड उनके रोल फंक्शन बी एंड सी, एंड जो कोफैक्टर्स है आपके एनएडी, एफएडी, एनएडीपी, एफएडीपी, उनके फंक्शंस। देन आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अलग-अलग कॉम्प्लेक्सेस 1 से लेके 5 तक सारे, एंड द इनहिबिटर्स कि भैया कॉम्प्लेक्स 1 एंटीमाइसिन क्या है, रोटेनॉन किसको इनहिबिट करता है, कौन से कॉम्प्लेक्स को, कितने एटीपी किसमें जनरेट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स में, कौन सा क्या साइकिल होती है, एंजाइम काइनेटिक्स में माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, Vmax, Km, लाइनवेवर बॉक्स प्लॉट, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, राइट। मोस्टली इस पे Vm, Kmax, इसी पे क्या वैल्यू आती है क्वेश्चन बहुत बारी, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। Immunology, innate versus adaptive, which one is specific, which one has memory, है ना, and toll-like receptors, PAMP, DAMP, pathogen-associated damage associated molecular patterns and membrane proteins, complement system, C3, C5a, anaphylotoxins कौन से हैं, antibodies, अलग-अलग antibodies, GMEAD, affinity मतलब एक single, avidity मतलब multiple bindings, FAB, FC, different antigen antibody interactions like agglutination, cold hemagglutination, then precipitation, opsonization, neutralization, right? Then human leukocyte antigen, HLA, hypersensitivity type of 4 types of hypersensitivity, which is immediate, which is delayed. Examples: Steven Johnson, SLE, hemolytic anemia, RH antigen, contact dermatitis. Vaccines के अलग 4 types: live, attenuated, inactivated, killed, and subunit और polysaccharides, conjugated vaccine. So अलग अलग आपको vaccines के examples पता होने चाहिए, and sometimes toxoids, diphtheria, tetanus, इंटरल्यूकिन 10 तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बट इंटरल्यूकिन अदर इंटरल्यूकिन आर इन्फ्लेमेटरी, जैसे वन इज इन्वॉल्व इन द फीवर। सो कौन सा इंटरल्यूकिन किस में इन्वॉल्व है, यू कैन जस्ट थिंक इट ऑफ, एक बार आपको वो भी पढ़ के चलना है। टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड एमएचसी कॉम्प्लेक्स 1 and 2. So 1 is having beta 2 microglobulin and is present on all nucleated cells. It's for MHC8, it's for CD8 killer cells, while MHC2 is CD4 helper cells, all antigen presenting cells, and it is on it is having no beta 2 microglobulin unlike MHC1, CD4 helper cells. Microbiology: the bacterial cell wall, peptidoglycan, teichoic acids, lipopolysaccharides, flagella, pili, fimbriae, R6 pili, bacterial growth curve, which phase, lag, log, stationary death, the tropophase, idiophase of fermentation. Sterilization, disinfection involves physical, chemical, biological methods of sterilization, in which we have hot air oven, autoclave, and all. Genetics में transformation, transduction, conjugation. Viruses में RNA and DNA viruses. Antimicrobials, you have mechanism of action of aminoglycoside, tetracycline, macrolides, chloramphenicol, fluoroquinolones, all of these antimicrobials. Biotechnology, we have ELISA, direct, indirect, sandwich ELISA, blotting, southern blotting, western blotting, northern blotting. Chromatography and blotting is one of the most common. Blotting may Ponceus staining. What are the different steps? Electrophoresis, how do you develop a blot? Chemdoc, how do you first of all transfer the blot? The different types of primary antibody, secondary antibody for incubation, and complete process. You must know from blotting, right from the protein extraction to the protein estimation to the protein analysis, everything, right? Because protein, this thing you can do by Laurie Bronsted, or there is Folencio Caltio, different methods, Bradford's method for protein estimation, right? Chromatography, ion exchange, gel permeation, and affinity chromatography for proteins. Gel may be, there is, you must know the examples of the gel used: cationic exchanger, anionic exchanger. Electrophoresis may isoelectric focusing, and SBS page and native page electrophoresis. Then what do you mean by agarose gel electrophoresis? Flow cytometry में FSC, forward scattering and sideways scattering. And what are the role of NXenes and DAPI staining, propium iodide, all of these dyes. And what are the different flow cytometry में, what do you do? The cell cycle can be determined, apoptosis, which phase of cell cycle it is in, apoptosis. There's other techniques like surface plasmon resonance, circular dichromism, Raman spectroscopy that you should also read, Ramchandran's plot,
microarray, DNA microarray, protein microarray for high throughput screening techniques. Then you should know about the basic processes of protein purification and centrifugation and dialysis. Human physiology में Frank Starling's law, Laplace's equation for your heart, ECG, cardiovascular system, complete information, double circulation, cardiac cycle. Respiratory में we have Bohr's effect, oxygen dissociation curve, GFR, and urine formation steps, and the different markers for GFR. Endocrinology में the HP axis, and the neurophysiology में GABA, glutamate, the different neurotransmitters which are inhibitory and which are excitatory. Developmental bio, in which we have gastrulation, bastrulation, organogenesis, morphogenesis, fertilization, the different terminologies of developmental bio, induced pluripotent stem cells and hematopoietic stem cells. You can also remember in detail about the different mol bio में holoblastic versus meroblastic, blastulation, cleavage, right? All of this trophoblasts, everything about zona pellucidas, acrosomal reactions when hyaluronidase from the sperm enters into the ovum, penetrates. Genetics and evolution में phylogenetics, in which you have UPGMA, NJ, ML techniques for phylogenetic variation analysis, molecular clock assumptions, the hereditary tree, pedigree analysis for autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive, mitochondrial inheritance. So different diseases have different, this is cystic fibrosis. So where does it fall? Huntington, where does it fall? What is the difference between estivation, hibernation, and all? What do you mean by Mendelian's genetics? Three law of Mendel's, right? Then assortment, independent assortment, law of segregation, right? These are the laws of three Mendel's law. Epistasis. What do you mean by epistasis? Population drift and population shift. Hardy-Weinberg's equilibrium. Cross, dihybrid cross, monohybrid cross. Ecology, environmental biology में nitrogen fixation, which are denitrification and nitrification bacteria. Population ecology, the biodiversity and hotspots like the Eastern Himalayas, the Indo-Burma, Sundaland, Western Ghats. Lotka-Volterra's interaction. The Lotka-Volterra's interaction is important for population ecology. Okay, don't forget it. Bioremediation methods, biomagnification methods, biostatistics and research methodology, predictive positive and predictive negative value, sensitivity, specificity, odds ratio, risk ratio, cohort, case control, crossover, are randomized control trials, how do you avoid biases, and how do you prevent confounding variables from affecting your test. Central tendency techniques like mean, median, mode, dispersion techniques like absolute and relative methods like variance, standard deviation, coefficient of variance, coefficient of standard deviation, range, coefficient of range, the probability distribution of normal, binomial, and Poisson's, the parametric, non-parametric test, t-test, z-test, ANOVA, Crystal Valleys, Mann-Whitney, Friedman. When do you use which test and which test is an alternative? What is the difference between parametric, non-parametric? So in parametric, the population is known. In non-parametric, the population is not known. As non-parametric, like Friedman, it's a replacement for two-way ANOVA, right? So Crystal Valley's t-test or Mann-Whitney for one-way ANOVA. So you should know about the alternatives, all right? Alternatives. So case control may you consider the odds ratio, cohort may you consider the risk ratio. Cohort, risk ratio, case control, odds ratio. What is confidence interval, p-value, then hypothesis testing, null hypothesis, alternate hypothesis, right? Chi-square method, goodness of fit, animal and plant physiology, C3, C4 cycle, Calvin cycle, photoperiodism, short day plants, long day plants, PEP carboxylase, RUBP carboxylase role. What do you mean by homeostasis, metabolic adaptations, thermoregulations, and the mineral nutrition, stress physiology, plant hormones, auxin, cytokine, gibberellin, abscisic acid, and all. So these are the different high quality topics that are very frequently asked. And this video was made specifically for you all so that you all can understand the importance of ICMR and the different GRFs and study accordingly. So wishing you all good luck. Have a great day.